Good afternoon, everyone. I hope I'm audible and the screen is properly visible to you all. Please let me know if everything is fine. Good afternoon, everyone. I hope I'm audible and the screen is properly visible to you. Okay, I feel everything is fine, right? Can somebody tell me from the chat section that I'm audible and the screen is properly visible to you all? Please, anybody from the chat section? Okay, so I think voice is clear, right? Good afternoon, Shan. Uh, okay, I think voice is clear and the screen is also properly visible to you all. So, good afternoon, students, and I welcome you to EduTap. And first of all, thank you for joining. And let me tell you that why we have started this series, what is this series, how we are going to cover entire ARD through this series, right? So you might know that हम नोटिफिकेशन के बाद आपके लिए आरडी स्टैटिक सीरीज लेके आते हैं एंड दैट इज अ काइंड ऑफ रिविजन सीरीज फॉर यू बट दिस ईयर अगेन नोटिफिकेशन इज डिलेड अ बिट तो वी थॉट व्हाई वेट फॉर द आफ्टर नोटिफिकेशन सीरीज तो अभी भी एक सीरीज लॉन्च कर ली जाए बिकॉज there are a lot of students who might have covered the ARD portion or who are covering or reading ARD portion, right? So that's why we thought let's start a series to help especially those students who are doing self preparation. So basically the idea of bringing this series is that all those who are new to NABARD grade A examination or who are doing self preparation, at least they get an idea what are the important topics through this series and they can cover at least the important topics for the NABARD grade A examination which is related to agriculture and rural development. Okay, so that is the main idea of this particular series. Again, I'd like to tell you here that this is a YouTube series, so each and everything cannot be covered in detailed manner. Okay, we cannot come and teach you entire chapter in detailed manner here, but what we will do, we will at least focus on some important areas that are very important for your exam. And how we are analyzing that? We are analyzing that with the help of previous year questions. So we see what are the PYQs, what topics are often repeated or most important. Based on that, we frame a question, okay, and based on that question, we explain you the concept, and then that is how you cover all the important topics, and that is the pattern of the series. So what we are going to do here, first I'll show you a question, okay, I'll ask you to answer that question because there are many students who might have covered already all these kind of things. So this will be a revision session for those, and those who are new, they can come and see the lecture and can solve the question along with me. So I'll show you a question. First, I'll ask you to answer it. If you have done well enough, otherwise those who cannot get the question, I'll explain the concept and then I'll give you the answer, right? So that is going to be the pattern of this particular series and all these classes that we are bringing up here, right? So good afternoon, everybody. So I want everybody of you to please stay with me through this class, and today is a very basic topic that we are taking, right? So basically today is the day where I am introducing you this series, plus we'll be learning few things, okay, few facts which are related to introduction to agriculture. But before I start my lecture, I would like to show you our syllabus and how we are covering this entire syllabus through this series. So basically I'm going to give you the timetable as well, okay, and what topics will be covered on what day. So first let's see the syllabus. So students, when we talk about ARD, right, agriculture and rural development, the syllabus is quite vast. This is the syllabus that is provided in NABARD notification. Now when we see the syllabus, there are a lot of topics that we need to cover, right? So we have this particular section which is about the general agriculture, then we have subsections like soil and water, so water resources, farm engineering, plantation horticulture, animal husbandry, fisheries, forestry, agriculture extension, ecology, and then the present scenario of Indian agriculture, which is basically the current affair part of agriculture. But we will be covering till the static part, which is ecology and climate change. So you can see this is your syllabus, right? All these topics need to be covered for your examination. Now let me tell you students, here what we are doing is we are covering important topics only, or we are touching the important topics through the MCQs. But
you have to cover all the topics, right? So this is going to be insight for you, that this session is going to be an insight that what kind of topics are more important, जहाँ पे आपको ज़्यादा focus करना है. Clear? So ये पूरा syllabus है, as you can see, and there are multiple topics here that we need to cover for our examination, right? Now let me give you the timetable. Let me show you that how we are covering all these topics. क्या timetable रहेगा, कौन सी faculty कौन सा topic cover करेंगी, and how this series is going to happen, right? So students, this is your timetable, right? So from today onward, we are starting this series. तो आज 19th August है. Today we are covering the introduction to agriculture part. Again, a very basic part, but it is also important to be covered, because if you see the very first line of your syllabus, which is agriculture definition, meaning its branches, so that needs to be covered. And there are few facts जहाँ से questions पूछे जाते हैं, like agriculture revolutions, or I would say persons in agriculture, or I would say important dates in agriculture, right? Branches of agriculture. So few questions have been asked in your examination. Then there are scientific names that need to be covered, right? So all those things, all those facts we are covering today, and from tomorrow onward we will be understanding the concept. Okay, so tomorrow we will be covering, on 20th we will be covering your agronomy and field crops chapter, right? So on 21st we'll cover the farming system. After that we'll cover cropping system, cropping pattern, and agrometeorology. Then we'll cover seed and sowing. Then we'll cover soil and water conservation in 2 parts, because it's a very big chapter that needs to be covered, and it's very important for your examination. So we need to cover more topics from this particular topic, from this chapter. So that's why I have kept 2 lectures for that, and then I'll be covering your water resources and irrigation management. So till here I'll be taking your lectures, and after that Diksha ma'am will take your classes, which will be related to farm and agriculture engineering, then animal husbandry in 2 parts, plantation and horticulture in 2 parts, forestry, ecology and climate change, fisheries, agriculture economics, agriculture extension, and rural development. So you can see we have tried to incorporate all the topics, all the chapters that are important for your examination in this series. But again, I would like to emphasize here that we cannot teach you everything in detail here. Rather, we'll touch on the points like which are important for, or most important for your examination. Clear? So I hope we are good with that, and I have explained you the concept of this particular series. With this we'll start the session. And students, let me tell you, जिनको भी लग रहा होगा like ma'am, already we have done this thing, already we have read this thing, today is a very basic class, I myself is telling that आपने अगर पुरानी videos देखी होंगी तो आपके लिए repetitive भी रहेगा, right? क्योंकि ये facts बहुत generic हैं, but do not think that ये बहुत easy concept है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, या बहुत easy चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो इसको हम overlook करें, नहीं करना है, क्योंकि students इस साल के लिए भी आप प्रिपरेशन दे रहे हो, राइट? इस साल के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, देने वाले हो, तो ये चीज भी रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहाँ पे हम जितने भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एक मार्कर क्वेश्चंस होते हैं बट आते हैं एग्जामिनेशन में, दैट वी आर गोइंग टू कवर, राइट? ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन, एंड लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स स्टार्ट practicing questions for today, and also understanding and discussing the topics, right? Before I start, I would like to tell you, if you have any queries, okay, regarding this particular lecture, regarding anything, we can take it at the end. Okay, right now I want you to please focus on the class. Whatever questions I am giving you, try to answer that. Okay, try to interact in the class for that particular question. If there is any doubt regarding any particular question, you can ask there and then only. But other than that, you can keep your query for the end, and at the end I'll take your queries. Okay, so chalo, let's start the class without wasting further time. So students, this question was asked in 2021 phase 2 examination, right? It says the study of field crops and their management is called. Your options are agronomy, horticulture, pomology, enology, none of the above. Now I'll give you 1 minute time. Please solve this question. Do let me know answer in the chat section quickly. Okay, if you have covered this topic, you might know the answer. Give me the answer. Otherwise, I'll explain you the concept and then we'll revisit this question again. Okay. So please, anybody with the answer? Very good, very good. Right, I can see few people have given the answers, right?
if you know the answer, well and good. If you have given the answer, that's great, and I can see the answer is also very correct. So if you do not know answer, do not worry, we'll revisit it once again. But first let's understand from where this topic has been asked and what is the background of this, right? So students, for that we need to first understand the definition of agriculture, right? So students, before telling you the definition of agriculture, let me tell you that agriculture is basically the management of soil, right? And agriculture do not only have the crop production sector. एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में नहीं है, राइट? एग्रीकल्चर में आपके लाइफ स्टॉक्स आते हैं, एग्रीकल्चर में आपका फिशरीज आता है, एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री आती है. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर एग्रीकल्चर. सो इट्स आर जनरल thinking that okay, agriculture is all about crop production. Okay, growing crop means agriculture. No, agriculture is a broad term used for different sectors like crop production, livestock rearing, poultry, then your forestry, fisheries. All these are part of agriculture, right? Now coming to the definition of agriculture, so first we need to understand from where this term agriculture have been derived from, right? So this the agriculture word comes from Latin word ager, which means land or soil. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि agriculture term जो है that is derived from a Latin word ager, जिसका मतलब है land or soil. And the next word is culture. Culture means cultivation. Okay, so when we are cultivating land or when we are using land, okay, and we are doing some kind of cultivation or utilizing this land for our own benefit, that is the agriculture. So agriculture is basically what the meaning of term agriculture is: management of land or soil or cultivation of land of soil and or soil. ठीक है, तो soil और land का management is agriculture. Now agriculture को अगर हम define करें, or if we talk about the definition of agriculture, so the definition says that it is the science, art and business of producing livestock and growing crops, right? It's science, art of producing crops and raising livestock for economic purpose. So basically अगर हम simple भाषा में से कहें, it's the science, art and business of growing crops and rearing livestock, because I have already told you agriculture is not just about crop production, it also encompasses livestock rearing and other sectors too. So if we talk about definition of agriculture, it's a science, art and business of growing crops and rearing livestock. Now let me explain to you how agriculture is a science, how agriculture is a art and how agriculture is a business. So when we talk about agriculture as a science, so students think this way, like if I give you some seeds, okay, and I tell you that okay, I want a particular yield from you, okay, if you do not have any understanding how these seeds grow, okay, and what amount of water you need to give to these seeds, okay, after how many days you need to give the water, or how many days you have to give the fertilizer, okay, if you do not have any understanding of agriculture, that means you might not grow that plant well, or you might not take care of those plants well, right? But if I give these seeds to some person who is already involved in agriculture, obviously that person can make that amount of yield, right? So the point is you need to have the understanding of how the plants are growing, okay, you need to have the understanding what amount of water will be required by which plant, because all the crops have different requirement, okay. You will see that few crops can easily grow with bare minimum water, few crops need high amount of water, like rice, it needs high amount of water, right? So how that is happening? Because they both have different physiology, right? One can thrive well in drought condition, other cannot withstand the drought condition, the rice need well or plenty of water to grow, right? So that is the physiology of these two crops. Now coming to other aspects, like the nutrient requirement will be different, growth pattern will be different, okay, environment that is required for growing one crop might not be suitable for the other crop, right? That is why you see that we grow few crops in Kharif season, few crops in Rabi season, right? So there are a lot of differences which we need to understand for each crop, and we need to understand them scientifically. ठीक है, अगर यहाँ पे साइंटिफिकली की बात करें, देखो, क्योंकि अगर मैंने जो सीड आपको दिया या किसी फार्मर को दिया, फार्मर विल बी बेटर देन यू, बट अगर I give seed
to the farmer and a scientist who is working in agriculture. Obviously scientist will manage it in a better way, और कम से कम इनपुट पे जो साइंटिस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ला सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट के पास साइंटिफिक नॉलेज है, फार्मर के पास थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज कम हो सकता है। फार्मर के पास स्किल हो सकती है, राइट, मैनेजमेंट स्किल हो सकती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, बट साइंटिफिक नॉलेज कम होने की वजह से फार्मर शायद उतना प्रोडक्शन ना कर पाए जितना एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कर पाए, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास वो स्किल के साथ साथ एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज है या क्रॉप को ग्रो करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज है वो भी है, राइट? इसीलिए हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज अ साइंस। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यू सो सीड एंड क्रॉप यू विल हैव द क्रॉप, आपको पूरी साइंटिफिक स्टडी करनी होती है, इसीलिए एग्रीकल्चर को एज अ साइंस स्टडी किया जाता है, एंड देयर इज अ सेपरेट ब्रांच फॉर दैट। ओके, यू माइट हैव सीन दैट पीपल हैव डन बीएससी इन एग्रीकल्चर और एमएससी इन एग्रीकल्चर। तो ये जो इंस्टीट्यूट सेटअप हुए हैं वो क्यों सेटअप हुए हैं? क्योंकि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, राइट? सो दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इज अ साइंस। देन इफ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एज अ आर्ट, तो स्टूडेंट्स अगेन, अगर साइंटिस्ट को सिर्फ नॉलेज है कि ओके ये जो पौधा है ये इस तरीके से ग्रो करेगा, इसको इतनी सनलाइट चाहिए, इतना वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, राइट? अगर सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, या फिर साइंस अगर आपको साइंटिफिक नॉलेज आपको है उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, बट अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगेन दैट क्रॉप प्रोडक्शन विल हैम्पर। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए स्किल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है? किस तरीके से कौन सी चीज होगी, कौन सा ऑपरेशन होगा फील्ड में, फॉर दैट स्किल इज रिक्वायर्ड। इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, राइट? सो साइंटिफिक नॉलेज ही जरूरी नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, एक स्किल भी आपको होनी चाहिए कि हाउ टू ग्रो अ क्रॉप, राइट? And ultimately, why we are doing this agriculture, why farmers are growing crop or rearing livestock? To have some kind of benefits, right? तो पैसे कमाने के लिए ultimately सारी चीज की जाती है। तो this agriculture is a business, right? तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या हुई? एग्रीकल्चर इज साइंस, आर्ट एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। क्लियर? आई होप अब बेसिक जो डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की वो आपको क्लियर है, राइट? और आई हैव टोल्ड यू थ्रू एग्जांपल्स आल्सो कि कैसे ये साइंस है, कैसे आर्ट है, कैसे ये एक बिजनेस है। क्लियर? तो अब एग्रीकल्चर का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आपने दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, इट इज अ लैटिन वर्ड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजर विच मीन्स लैंड, कल्चर मीन्स कल्टिवेशन, और इसकी डेफिनेशन क्या है? साइंस, आर्ट एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द अनदर टॉपिक विच इज ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, आई होप यहां तक कोई डाउट ना हो, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, जब हम एग्रीकल्चर की ब्रांचेस की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये ब्रांचेस बनाई क्यों गई हैं, राइट? व्हाई दीज ब्रांचेस हैव बीन फॉर्म्ड? बिकॉज इफ वी सी एग्रीकल्चर is, as I've told you, it's all not only about crop production. Here we have to agriculture is also about forestry, agriculture is also about animal management, it is also about fisheries, it is also about poultry, right? So there are so many I would say sector under agriculture, and in order to understand these sectors in detailed way or in a detailed manner, this agriculture has been divided into several branches. तो एग्रीकल्चर एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके सब ब्रांचेस हैं, राइट? तो एग्रीकल्चर इज अ साइंटिफिक स्टडी जिसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस एग्रीकल्चर और वी कैन लर्न अबाउट एग्रीकल्चर इन अ गुड मैनर, in a scientific way and in a good way, right? ताकि in a easy way I would say. तो अब जो branches हैं एग्रीकल्चर की वो कौन कौन सी हैं? First is agronomy, right? So very important and very I would say basic branch of agriculture is agronomy. अब agronomy क्या है? कौन सी branch है? Basically in agronomy you study about field crops plus their management. ओके, तो आप यहाँ पे क्या करते हो? एग्रोनॉमी में आप फील्ड क्रॉप्स और उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो, राइट? नाउ व्हाट आर फील्ड क्रॉप्स? फील्ड क्रॉप से नाम से ही समझ आ रहा है, फील्ड क्रॉप्स मतलब जो फील्ड में क्रॉप ग्रो की जाती है। बट यहाँ पे हमने इसको स्पेसिफिकली मेंशन क्यों किया है? क्योंकि सारी क्रॉप्स ही फील्ड्स में होती है, राइट? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मेंशन करने का मतलब ये है कि आपकी कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे कि राइस, व्हीट, ओट्स, barley, right, maize. So these crops which are grown season after season,
ओके, एंड फॉर द क्रॉप्स विच यू नीड टू मैनेज द लैंड। देखो अब आप राइस ग्रो करोगे तो राइस ग्रो करने से पहले यू विल हैव टू प्रिपेयर द लैंड, राइट। और राइस जो आप ग्रो करोगे यू विल नॉट ग्रो इट इन वेरी स्मॉल एरिया, right? You will grow rice in a very large area. It will be 10 hectares or 12 hectares. It will be never a area like you will not never grow rice in your backyard, right? तो राइस जब फार्मर ग्रो करता है एक अच्छे खासे लेवल पे ग्रो करता है। सिमिलरली मेज, बार्ले, व्हीट, ओट्स ये सारी फील्ड क्रॉप्स है जो कि जिसके लिए हमें फील्ड को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। We need to prepare the field before sowing these crop, right? So such crops which are sown in the field and for which field preparation is required, such crops are called field crops. And we cannot specifically say that these field crops are grown annually. They can be biannual, they can be they can be in the field for 2 years also, they can be in the field for 6 months also. So field crops basically field में grow की जाने वाली crops जिसके लिए field preparation required होती है, right? अगर ये बात है तो फिर इसके अलावा कौन सी वो क्रॉप है जिनके लिए हमें फील्ड प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या फिर और टाइप की क्रॉप्स जो फील्ड क्रॉप से डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जैसे कि आपके मैंगो, राइट, लीची, राइट, जिसमें कि आपके फ्रूट्स क्रॉप हैं, बेसिकली फ्रूट क्रॉप्स, राइट। देन आपके कुछ क्रॉप्स जैसे कि वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स में क्या होता है, वेजिटेबल क्रॉप्स जैसे कि आपके टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, राइट, जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स होगी। अब देखो ये जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, चलो अभी फ्रूट्स क्रॉप्स की बात बाद में करेंगे। वेजिटेबल क्रॉप्स जो हैं ये भी सीजनल क्रॉप्स हैं, ऐसा तो नहीं है ये पेरिनियल क्रॉप्स है। एक बार आपने फॉर एग्जाम्पल आपने स्पिनच एक बार ही ग्रो किया तो वो स्पिनच आपके सालों साल चलता जाएगा, आपको वो एक सीजन में अपरूट करना पड़ेगा, नेक्स्ट सीजन फिर से लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये क्रॉप कैसे डिफरेंट है फील्ड क्रॉप से, लेट मी टेल यू। देखो फील्ड क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लाइक राइस को आप 6 महीने तक रख सकते हो। उसके ऑन द अदर हैंड अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, यू नीड अ प्रॉपर फैसिलिटी टू स्टोर दैट पर्टिकुलर क्रॉप। और स्पिनच को अगर आप राइस की तरह हैंडल करो, इट विल बी नॉट सेम, ठीक है। अगर हम स्पिनच ग्रो कर रहे हैं, स्पिनच को आपको अगर स्टोर करना है और इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, आपकी जो आपको पता होगा वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट क्रॉप्स होती है, इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। शेल्फ लाइफ मतलब कि अगर आपने ला के सब्जी या कोई भी फल है शेल्फ में रख दिया तो वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। 1-2 दिन में ही आप देखोगे उसमें रॉटिंग हो जाएगी या वो ओवर राइप हो जाएगा, राइट। एंड वो कुछ टाइम बाद कंज्यूमेबल भी नहीं रहता है, यू हैव टू थ्रो इट, ये स्पॉइल हो जाता है। तो शेल्फ लाइफ मतलब कि ये जो क्रॉप्स है ये काफ़ी कम समय तक ही आप इनको शेल्फ में रख सकते हो। अगर आपको ये स्टोर करना है तो आपके लिए रेफ्रिजरेटर है, यू विल हैव टू कीप इन द रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेशन में भी वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही रह सकती है, आप उनको 6 महीने तक तो स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर करनी है देन यू नीड अ प्रॉपर फैसिलिटी फॉर दैट। तो ये क्रॉप आपकी डिफरेंट है फील्ड क्रॉप से, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो क्रॉप्स है अदर देन फील्ड क्रॉप्स, उनको हमने रखा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में और हॉर्टिकल्चर ब्रांच में, जहां पे कि आपकी स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। ओके, अब ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, आफ्टर दैट यू नीड टू मैनेज दैट क्रॉप, right? Post harvest management is basically once the crop is harvested, you need to manage that crop so that the quality of product remain the same, okay, till it reaches the consumer, ठीक है। तो आपने क्या इंश्योर करना है कि once your crop is harvested, उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी ही रहे जब तक वो कंज्यूमर के पास जाता है, राइट, उसकी स्पॉइल ना हो। तो मोस्टली जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत होती है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में होती हैं। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या क्या क्रॉप्स आती हैं, तो बेसिकली अगर फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्लावर क्रॉप्स, ओके, आपके जो फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, दीज आर ऑल आर पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अलॉन्ग विद दिस हॉर्टिकल्चर में और भी सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि फील्ड क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैसे डिफरेंट है, राइट। फील्ड क्रॉप के लिए आई हैव टोल्ड यू, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में देखो जो डिफरेंस मैंने पहले बताया था कि आपको फील्ड क्रॉप के लिए
फील्ड प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम मैंगो, लीची और गुआवा, वी आर ग्रोइंग सम पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप मीन्स एक बार आपने मैंगो स्टैब्लिश कर दिया, आपको हर साल मैंगो नहीं ग्रो करना है, राइट? यू नीड टू मैनेज दैट प्लांट। तो उसके लिए आप हर साल लैंड प्रिपरेशन नहीं करोगे। इस तरीके से आपकी जो फील्ड क्रॉप है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप से डिफरेंट है, राइट? देन आपकी जो शेल्फ लाइफ मैंने बताई कि फील्ड क्रॉप को आप काफी टाइम तक रख सकते हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप को आप नहीं रख सकते हो। अगर आपको रखना है देन यू नीड प्रॉपर फैसिलिटी फॉर दैट, राइट? तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दीजिए कि फील्ड क्रॉप्स अलग हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अलग हैं। तो जब हम सिर्फ फील्ड क्रॉप्स को पढ़ते हैं कि जैसे कि आपका राइस, व्हीट, मेज, बार्ले और सॉर्गम, मिलेट्स क्रॉप्स जितनी हैं आपकी, राइट? सिमिलरली ग्राउंडनट, कॉटन, सनफ्लावर, सैफलावर, ओके, ऑयल सीड्स क्रॉप जिसमें आपका मस्टर्ड, सीसम, नॉट सीसम, सॉरी, इट्स अ फॉरेस्ट क्रॉप, मस्टर्ड, सोयाबीन, राइट? और आपकी जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, ये सारी क्रॉप्स क्या हैं? फील्ड क्रॉप्स है। और इन फील्ड क्रॉप्स की स्टडी और इन फील्ड क्रॉप्स को कैसे मैनेज किया जाता है वो आता है आपका एग्रोनॉमी में, राइट? सो एग्रोनॉमी इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द, नॉट डिस्कसिंग, वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है? तो आपका राइस का ग्रो करने का पैटर्न अलग होगा, राइट? सिमिलरली यू विल नीड डिफरेंट सेट ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर व्हीट, you will need different set of practices for oil seed crops, there will be completely different set of practices for pulses crop. pulses में भी ग्राउंडनट किसी और तरीके से ग्रो करेगा, आपका उर्द किसी और तरीके से ग्रो करेगा, राइट? तो ये सारे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस फॉर ऑल दोज क्रॉप्स आर स्टडीड अंडर एग्रोनॉमी एंड हाउ दे आर मैनेज्ड, दैट इज ऑल्सो डेल्ट अंडर एग्रोनॉमी, ठीक है? तो ये एग्रोनॉमी हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज हॉर्टिकल्चर, अगेन आई हैव टोल्ड यू crops which are not part of field crops comes under horticulture. Along with that there are few things additionally that we study under horticulture that we are going to discuss later, right? Now apart from your forestry, apart from agronomy and horticulture, there is another branch which is forestry. अब फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री से नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अबाउट समथिंग अबाउट फॉरेस्ट, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम फील्ड क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, forest crops are also important for us, right? Many tribes are dependent on forest for fodder, for fuel, for fiber, right? So forest crops are also important part of agriculture, and hence a different or a separate branch has been made which is called forestry. So basically forestry is nothing, it's about the study of forest, right? And how these forests are helpful for the people, and how they are providing the food, timber, fiber to the people, right? So that is your forestry, which is a separate branch of agriculture, which talk about forest crops and their management. Now next we have animal husbandry. Now students, at this says animal husbandry, so here we are discussing or we are studying about the rearing of animals, right? So you might have seen farmers do have few animals like cow, buffalo, sometimes pigs, sometimes goats, sometimes sheep. Few farmers are doing poultry also, right? So all those, you know, animal management, how to manage these animals so that we can get best production out of them, that is studied under animal husbandry branch of agriculture. Clear? So animal husbandry is about how to rear these animals, how to breed these animals, how to manage these animals so that we can get maximum output from them, right? Okay, coming to the other branch which is fishery science. So students, in India, you know, farmers who are living in the coastline of our country, okay, they are majorly dependent on fisheries. So their lives, you know, their sustenance is basically dependent on the fisheries that we have in the ocean that surrounds our coastline, right? So the farmers are also dependent on fisheries, so hence we need to understand the fisheries also, right? How to grow these grow these fishes, how to culture them, how to cultivate them, okay, how to capture them, and what kind of other things can be generated, like how to make a value addition product from these fisheries, or the product that we get from the fisheries, right? So the thing is that fishery is also important branch of agriculture, or I would say the farmer who are dependent on fisheries are also important for us. So we need to understand these fishes, we need to know how to grow these fishes. For that a separate branch has been made which is a fishery science, right? So students, इससे related आपकी एक जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, right? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, it's very important, and you might have seen that often questions have been asked in your examination from this particular scheme.
Plus there was once a descriptive answer writing asked, descriptive this whole scheme was there in this descriptive answer writing. तो आपको इस scheme को पूरा लिखना था, right, आपके आंसर में. तो you can see फिशरीज इज इंपॉर्टेंट. तो फिशरी से रिलेटेड जो आपके न्यूज में अपडेट्स रहते हैं, इफ दिस स्कीम इज इन द न्यूज ड्यू टू एनी रीसेंट अपडेट, या फिर ये जो स्कीम है इन जनरल, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फिशरी से रिलेटेड काफी सारा डेटा पूछा जाता है, राइट. सो इसीलिए फिशरीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड एक सेपरेट ब्रांच बनाई गई है, दैट इज फिशरी साइंस, राइट. ओके, तो यहाँ पे we have discussed about the branches where we were getting some kind of product, right? But there is another branch which is known as agriculture engineering. Now students, when we need to manage these crops, when we need to harvest the crop, when we need to remove the weeds from the field, when we need to sow the seed, so we need some kind of implements, we need some kind of tools for that, right? So all these tools, they are studied under a different branch which is agriculture engineering. So basically agriculture engineering is a supporting branch of agriculture. So in agriculture engineering, what we study about all the tools, tillage implements that are required for managing the crops or managing the livestock. That comes under agriculture engineering, right? So agriculture engineering is a supporting branch, or you can see the allied branch of agriculture. Similarly, home science is there. Home science, we cannot say it's a specific branch of agriculture, but sometimes the produce that we are getting from agriculture, what is the quality of that produce, what is the nutritional value of that produce, we need to understand that also, right? So that is something which is studied under home science. So major branches, if I talk about agriculture, are agronomy, horticulture, forestry, animal husbandry, fishery science, and your supporting branches are agriculture engineering and home science, right? Okay, so I hope till here everything is clear and there is no confusion. ठीक है? चलो. Now, before I move ahead to your question and before I answer that question, I would like to show you one more thing. Okay, there is one categorization that has been made, and once it was asked in your examination, so we need to understand that also. So students, if we can divide all these branches into different groups, so we can make 3 groups here: crop production group, animal management group, and allied agriculture group. So what will come under crop production group? As it says, crop production group, so means we are producing crop. So crops are produced where? In agronomy, in horticulture, and in forestry, because you will see here we are dealing with crops mainly, right? Then animal management group is basically the group where we are managing the animals. So there are 2 branches: animal husbandry and fishery science. That will be part of animal management group, right? Coming to the allied agriculture group, in allied agriculture group we have 2 branches like agriculture engineering and home science, which I have already told you, they are not specifically the branch of agriculture, but they are the supporting branch of agriculture. Clear? So this is the classification that you need to understand, because once the question was asked to you like which of the following is not part of crop production group, so you need to understand agronomy, horticulture, forestry are part of crop production group. Other than that, we have 2 animal management group, animal husbandry and fishery science, and then we have 2 allied groups, agriculture engineering and home science. Clear? Okay, so I hope till here everything is fine and you have understood everything. Now let's come back to that question again, and now if anybody has not answered, you can answer there, and we'll read the question again. So it says study of field crops and their management. Okay, so just now we have understood it is agronomy, right? So answer here will be agronomy, and I can see all of you have given the right answer. Great. Let's move ahead to the next question. So the now next question is about which branch of agriculture that deals with the production of fruits, vegetables, flowers, ornamental plants, spices, condiments, beverages. So I have already told you the answer, right, when we have discussed about the branches of agriculture. Now this question was asked to you in 2021 phase 2. So please do let me know the answer here. What will be the answer? Quickly. We have already discussed all the branches of agriculture. Now it should be easy for you to answer. Very good, Akshada. You have given the answer, and anybody else? Very good. Answer will be horticulture, right? बहुत easy है. हमने समझ लिया कि horticulture क्या है. Horticulture is that branch of agriculture where we are dealing with crops like fruits, vegetable, flowers, and things like that, right? Okay. Coming to the next question, it says
स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड एज, ठीक है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड एज. तो अब when we discussed that horticulture have different kind of groups, or I would say under horticulture there are different branches that we need to understand, right? So under horticulture also there are sub branches which are formed, okay? We have agriculture, then we have horticulture as a sub branch, and then for horticulture also we have some branches that are being made, right, that are made there. So we need to understand these branches, and let us understand. I can see people have given the right answer for this also. Very good, right? So students, if you do not know all these branches, so let's first discuss all these branches and then we'll solve that question, right? Okay. Now coming to the branches of horticulture, ठीक है? Horticulture में जैसे कि I have already explained कि there are so many different crops and so many other things that comes under horticulture, right? And due to that, this horticulture crops and horticulture is separate branch than agronomy. Clear? Okay. So first thing that I have discussed with you that horticulture में जो crops होती हैं, they required post-harvest management, right? So first branch of horticulture is post-harvest management, I would say. देखो, why this is a separate branch of horticulture? Because under this branch, under this post-harvest management branch, specifically you only read about how to manage crops after harvesting, right? So under post-harvest management, you only and only read about, or you study about how to manage crops after harvesting, okay? So like for example, if you have harvested a flower crop, so how you will handle that flower crop, right? How you will make sure that it is not deteriorated till it reaches the consumer, right? Similarly, if you have harvested vegetable crops, how you will handle that particular vegetable crop after harvesting, right? How you will store that vegetable crop. Similarly, a fruit crop, right? So post-harvest management, how do we manage all these crops after harvesting, that is studied under post-harvest management branch of horticulture, right? This is a branch of horticulture. Now let me tell you, it is very important, okay? You need to understand what is the post-harvest management, plus what are the different types of post-harvest techniques that are used, because descriptive answer writing was asked to you here also, right? All the schemes related to post-harvest management is important. If they are in the news, they are in the scheme, please do read those schemes, क्योंकि अगर descriptive answer writing यहाँ से आ गया, you should have at least 3 to 4 schemes जो post-harvest management के लिए काम कर रही हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हो. अदरवाइज अगर वो स्कीम्स न्यूज में है तो ये टॉपिक आपका सिलेबस का पार्ट है, यू शुड एटलीस्ट रीड इट वंस, राइट? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर, सी फ्लोरी मीन्स फ्लावर, ठीक है? फ्लोरी मीन्स flower. So it's basically the branch of horticulture where we are studying about flowers and their management. Simple, right? जितने भी flowers हैं उनका management, उनका cultivation, how to manage them, everything is studied under floriculture. Coming to the other branch, ठीक है? So before I take the landscape branch, let's talk about olericulture. Olericulture is basically, students, it deals with the vegetable crops. Okay, it deals with the vegetable crops. So all your vegetable cultivation and their management is studied under olericulture. Similarly, we have pomology where we are studying about your fruit crops, right? So all your fruit crops and their management, that is studied under pomology branch of horticulture. Okay, now apart from this we have viticulture. So students, for grapes, okay, so grapes are, they grow in vines. They are different from other fruit crops. Also they need different kind of care, they need different kind of management aspects. So hence grapes has been kept under different branch which is known as viticulture, ठीक है? तो grapes के लिए आपको याद रखना है कि viticulture, rest other fruits are studied under pomology. Clear? Okay, coming to the other branches which is enology. So students, as we know that these grapes are also used for making wine, right? So how is this wine is made, or wine and wine making, how that happens, that is studied under enology. Clear? So that is something which is related to viticulture, or I would say a different branch of horticulture, right? But then we have this arboriculture also. Arboriculture is what? So in all the branches we are studying about different type of crops. So if I talk about floriculture, so all your flower crops are there. If I talk about olericulture, all your vegetable crops are there. If I talk about pomology, all your fruit crops are there.
but we have never discussed any branch where we are only managing one plant. Sometimes students, we need to manage only one plant. You might have seen that if there is a big garden, okay, and in that big garden there is a tree, palm tree, okay, a single palm tree. Now, if that is a single palm tree, that doesn't mean that it does not require management practices, or we do not have to manage or take care of that single palm tree, right? So when we only, manage one tree, one plant, that is known as arboriculture, right? So managing of only one tree, one plant, that is studied under arboriculture. So this is again a different branch where we only manage, or we only learn about how to manage that one plant, right? So that is your arboriculture. Now coming to the landscape horticulture. Students, in horticulture, you not only read about all these things that we have discussed so far, you also read about landscape. What is landscape? Landscape is basically beautification of a land. Like for example, if government want to develop a garden, right, a beautiful garden, so that people can visit there and people can spend time there. So for developing that garden, it's not like that some government will give the contract to somebody and contractor will make the garden as per his will, right? ऐसे गार्डन्स नहीं बनते हैं. जो आपके बहुत सारे जो मुगल गार्डन हैं या फिर जो आपके जापानीज गार्डन हैं, they have particular theme associated with them, right? आप देखना, मुगल गार्डन एक certain type के होते हैं, जापानीज गार्डन एक certain type के होते हैं, इटालियन गार्डन एक certain type के होते हैं, सिमिलरली फ्रेंच गार्डन डिफरेंट होते हैं, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट लैंडस्केपिंग. ठीक है, आप कैसे किसी लैंड को ब्यूटिफाई करते हो, वो भी एक स्टडी है. दैट इज अ सेपरेट स्टडी, और ये किसके अंदर पढ़ी जाती है? लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर के अंदर. ठीक है, सो लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर इज ऑल अबाउट हाउ डू वी ब्यूटिफाई दिस लैंड. क्लियर? सो नाउ आई होप ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर आर clear to you, right? If you have any confusion, you can ask, but before that I'll move to the question that was asked to you before. The study of vegetables is called as, now I hope it's very easy to answer, it's olericulture, right? It's olericulture. Clear? Chalo, let's move ahead to the next question. Now please quickly give me the answer. It was asked to you again in 2021 phase 1, right? What is the study of fruit is called? ठीक है, चलो quickly, we have discussed all the branches already, right? You don't have to now think, just quickly give me the answers. Very good, it's pomology, right? Very good. So pomology is the study of fruit. Coming to the next question. Now this was asked in 2019, sorry. Our question was, what is the pink revolution about? ठीक है, your options are given. Now if you know what are these revolutions and what is specifically pink revolution about, please let me know. Otherwise I'll tell you what is revolution and what kind of revolutions that we have and जो आपको याद करने हैं. ठीक है, okay, so let's move ahead. So students, what are these revolutions? First of all, let's understand that, right? So I'll give you example of green revolution, ठीक है, because that is something which we all have heard about, right? तो green revolution के बारे में हम सभी को पता है, right? क्या हुआ था? That before independence and after independence also, what was happening? The farmers that we have, they were using or they were doing traditional farming, right? So जो agriculture की production थी, that was very limited, right? So इस वजह से क्या हुआ? We were not able to fulfill the demand of our people, right? So the country was incapable of fulfilling the demand of its own country, right? And we were usually dependent on other countries. So mostly बाहर की countries से हमारे लिए जो basic food है like rice, wheat, ये सारी चीजें आती थी, right? Now later on, government realized that we should work on our agriculture also, right? Initially after independence, the more emphasis was given on the industrialization. तो agriculture कहीं पीछे रह गया था. But later on, जब भूखमरी हुई, poverty हुई, malnutrition देखा गया, then the leaders of our country thought कि okay, agriculture को भी हमें promote करना चाहिए. And then from there onward, agriculture के जितने institute बने, जितनी improved varieties लाई गई, वो उसके बाद हुआ, right? And इससे क्या हुआ कि हमारे country में Dr. Norman E. Borlaug was a scientist who is known as father of green revolution.
he was the person who introduced few foreign variety in our country, right? And these varieties were directly given to the farmers, and farmers grow these varieties. And what happened, it was seen after few years that these varieties out yielded, and we were able to become self sufficient in meeting our own food grain requirement. तो अब क्या हुआ कि हम self sufficient बन गए थे in wheat, in rice, in meeting our own demand. तो इससे क्या हुआ, इससे एक रेवोल्यूशन आया. कैसा रेवोल्यूशन? जिसमें फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, राइट? सो रेवोल्यूशन क्या है? व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर कमोडिटी इंक्रीज्ड, ओके, दैट हैज चेंज्ड द होल सिनेरियो फॉर अस. So that's called the revolution. So green revolution was one of them, and ये पहला revolution था जो हुआ था, जिससे जो भी हाई यील्डिंग वैरायटी है वो इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे कंट्री में, एंड फार्मर्स वर गिवन दोज हाई यील्डिंग वैरायटी, and farmers grow them, and now we are self sufficient. Also we are exporting these food grain to other countries. So we not only become self sufficient, but we also started exporting these food grain, right? And the problem of deficiency that was there before, that get solved, right? So अब आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है green revolution was about, or the revolution in which the food grain production increased is known as. So such type of questions is asked, right? So you have to directly read this fact. You have to just learn all these facts. Ki green revolution was about food grain production, when food grain production increased, right? Similarly, red revolution, when production of meat and tomato was increased, right? From the color also somewhere you can relate these revolution, ठीक है, क्योंकि red color की meat और tomato होता है, तो it is about meat and tomato. Then round revolution for potato. So basically potato are round. You can relate things and you can learn like this. Okay. Silver fiber revolution. अब देखो students, we have two fiber crop, cotton and jute, which are very, very important, right? So cotton is, the fiber of cotton is white. So it was given name silver fiber revolution when the cotton production increased, right? Similarly, we have oil seed revolution, which was known as yellow revolution. So basically it was for the oil seed crops, but yellow revolution इससे आप ले सकते हो कि मस्टर्ड का जो क्रॉप है that is having yellow flower. तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हो. एंड मस्टर्ड इज अ मेजरली योर ऑयल सीड क्रॉप्स, ठीक है? तो ऑयल सीड रेवोल्यूशन को, ऑयल सीड प्रोडक्शन के इंक्रीज होने को बोला गया येलो रेवोल्यूशन. सिमिलरली आपका व्हाइट रेवोल्यूशन है जब मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एंड योर व्हाइट रेवोल्यूशन वाज आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, is also known as I would say Operation Flood. Okay, recently भी काफी न्यूज में रहा है व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, सो प्लीज डू रीड अबाउट इट, ठीक है, कि क्यों न्यूज में है व्हाइट रेवोल्यूशन. क्लियर? चलो, मूविंग अहेड टू द अदर रेवोल्यूशन विच वाज ब्लू रेवोल्यूशन, जिसके लिए जब फिशरीज प्रोडक्शन और फिशेस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, दैन दैट इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन. ब्राउन रेवोल्यूशन इज फॉर लेदर एंड कोकोआ, राइट? Golden fiber revolution, again if you can recall, silver fiber revolution we have read just now. Golden fiber revolution is for the jute, because jute का जो fiber है वो that is golden in color, right? Then protein revolution for pulses. Pulses are rich in protein, we know that, right? So that's why protein revolution was given name. Pink revolution, onion and prawns, ठीक है? So जो question था कि pink revolution is about, so it is about onion and prawns production. Then we have golden revolution. So students, golden revolution is associated with three things. It is associated with food, increase in food production, increase in honey production, and in overall horticulture production, increase in overall horticulture production. So golden revolution की अगर बात करें तो अगर आपके ऑप्शन में ये तीनों हैं तो प्लीज मार्क ऑल ऑफ द अबव, अदरवाइज इन तीनों में से कोई एक अगर ऑप्शन में है दैट विल बी द आंसर, राइट? चलो, नाउ क्विकली गिव मी द आंसर. व्हाट इज द पिंक रेवोल्यूशन अबाउट? Easier, right? I can see if you have already given the answer, so it will be onion and prawn production, right? Let's move ahead to the next question. Again, ये phase 2 में पूछा गया था. What is white revolution about? Very easy. I have already told you. White revolution is also known as Operation Flood, right? Okay. So what is the answer? Very good. I can see people have given the right answer. Yes, very good. It's milk production. It's increase in the milk production, right? Chalo, quickly let's move ahead to the next question. So it says, what is blue revolution about? ठीक है, ये 2020 का question है. So blue revolution is about, we have already discussed. We have already discussed this.
कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? क्विकली, वेरी गुड, इट इज अबाउट इंक्रीज्ड इन फिश प्रोडक्शन, राइट? चलो, दैट्स ग्रेट। नाउ स्टूडेंट्स, कभी कभी आपके पास साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं, राइट? नाउ दिस इज द अनदर थिंग जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है कि मैम डू वी हैव टू लर्न द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल द क्रॉप्स, ठीक है? अगर नहीं करना है तो कौन सी क्रॉप्स का करना है? बहुत सारा कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, राइट? क्योंकि 2024 में फेज 1 में बार्ले का साइंटिफिक नेम पूछा गया था, राइट? अब इसका देखो स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन डू एट योर एंड, क्योंकि देर आर many crops, there are multiple crops, right? And it's not possible for you to learn scientific name of each and every crop because it will take a lot of time, right? और जब हम एग्जाम में देखें तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ही होगा जो साइंटिफिक नेम से पूछा जाएगा, राइट? तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? और ये जो क्वेश्चन होता है, अभी तो बार्ले पूछ लिया गया था 2024 में, बट आई थिंक इन 2022 और 23 में स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम पूछा गया था, राइट? तो अब स्ट्रॉबेरी इज नॉट अ वेरी कॉमन क्रॉप, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम कोई इजीली याद कर सके, राइट? तो स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी कैसी डिफरेंट क्रॉप है और कॉमन क्रॉप नहीं है, तो शायद अगर मैं ये बोलूँ आपको कि जो कॉमन क्रॉप्स हैं उनका साइंटिफिक नेम याद कर लो, वहीं से क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी नॉट करेक्ट अगेन, ठीक है? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? तो द थिंग इज दैट वी विल चूज फ्यू क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप्स, उन क्रॉप्स का जो कॉमन क्रॉप्स है उनका हम याद कर लेंगे। अगर वहां से क्वेश्चन आएगा वेल एंड गुड, अदरवाइज दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी साइंटिफिक नेम, ठीक है? तो अगर यू नो द आंसर, आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर, वेरी गुड, बट let's learn about scientific name of few important crops and then we'll come back to this question again, right? चलो, तो पहले कुछ फील्ड क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम याद कर लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले राइस का देखो साइंटिफिक नेम बहुत इजी, बहुत कॉमन, आपने सुना भी होगा, ओराइजा सटाइवा, राइट? सो स्टूडेंट, समटाइम्स फैमिली भी पूछी जा सकती है, तो एटलीस्ट आप इन क्रॉप्स का फैमिलीज भी याद कर लो, ठीक है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे फैमिलीज भी पूछ ली जाए, राइट? तो ओराइजा सटाइवा की जो फैमिली है दैट इज पोएसी, राइट? देन यू हैव सेकेंड मोस्ट कॉमन क्रॉप दैट इज व्हीट विच इज ट्रिटिकम एस्टिवम, राइट? तो इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, पोएसी फैमिली का है। मेज इज जिया मेज, ठीक है, इजी है याद करना, मेज का तो आई थिंक इजी है, जिया मेज, एंड इसका फैमिली है पोएसी। बार्ले जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज होडियम वल्गेर, साइंटिफिक नेम इज पोएसी अगेन। सॉर्गम इज सॉर्गम बाइकलर, अगेन सॉर्गम का भी इजी है याद करना है बिकॉज सॉर्गम में ऑलरेडी सॉर्गम है साइंटिफिक नेम में, राइट? तो सॉर्गम बाइकलर पोएसी इसकी फैमिली है। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, जो ये सारी क्रॉप्स है ये पोएसी फैमिली की हैं, और ये सारी क्रॉप्स क्या हैं? मोस्ट आई वुड से ऑफन हर्ड क्रॉप्स है, जो आप सुनते ही हो, लाइक राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, सॉर्गम, इतना तो हम कॉमनली सुनते ही हैं। एग्रीकल्चर की जब बात होती है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी इन क्रॉप्स में, ये क्रॉप्स का काफ़ी जगह एज ए एग्जाम्पल भी यूज़ होते हैं, राइट? तो ये आपने याद करना है कि ये सारी जो क्रॉप्स है ये पोएसी फैमिली की है, ठीक है? देन कम्स कॉटन विच इज गॉसिपम हिरसुटम, ये मालवेसी फैमिली की है। कॉटन की जो फैमिली है वो थोड़ी डिफरेंट है, दैट इज मालवेसी। और जो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो सीरियल क्रॉप्स होती है ना, ये सारी आपकी सीरियल क्रॉप्स है, तो सीरियल क्रॉप्स बेसिकली पोएसी फैमिली की ही होती हैं। तो सीरियल्स क्या हैं? आपकी ग्रास फैमिली के ही मेंबर हैं और ग्रास फैमिली के ही प्लांट हैं विच इज द पोएसी फैमिली। तो जितने सीरियल्स होंगे वो आपके पोएसी फैमिली के ही होंगे, ठीक है? और ये आपके सीरियल्स हैं। देन कमिंग टू कॉटन, कॉटन आपकी फाइबर क्रॉप है, मालवेसी फैमिली की है, एंड साइंटिफिक नेम इज गॉसिपम हिरसुटम। देन वी हैव सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, ऑयल सीड क्रॉप, राइट? फेबेसी फैमिली की है। ग्राउंडनट इज आर्चिस हाइपोजिया विच इज अगेन ऑफ फेबेसी फैमिली। शुगर केन इज सैकरम ऑफिसिनारम, पोएसी फैमिली का है, ठीक है? शुगर केन भी पोएसी फैमिली का है। आपने शुगर केन का अगर प्लांट देखा होगा, घास की तरह दिखता है, राइट? इट लुक लाइक अ ग्रास, तो उसको उसी से याद करो कि ग्रास फैमिली पोएसी। देन वी हैव मस्टर्ड ब्रेसिका जूनसिया विच इज ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है? इसके नाम से आप याद कर सकते हो, ब्रेसिका ब्रेसिकेसी, ठीक है? सनफ्लावर इज हेलियंथस एनस, एस्टरेसी फैमिली की है, तो सनफ्लावर की फैमिली भी थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज एस्टरेसी। चिकपी सिरसर एरिटियम विच इज फेबेसी फैमिली। पिजन पी कैजनस कैजन विच इज फेबेसी फैमिली, ठीक है? तो इस तरीके से आपने साइंटिफिक नेम और फैमिली याद करनी है, और इतनी क्रॉप्स की कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? ये कॉमन क्रॉप्स है,
ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से ही साइंटिफिक नेम पूछे जाएंगे फ्रॉम द फील्ड क्रॉप। अगर फ्रूट क्रॉप की बात करें तो हमने कुछ फ्रूट क्रॉप्स के भी साइंटिफिक नेम याद करने हैं, जैसे कि मैंगो मेंजिफेरा इंडिका फ्रॉम एनाकार्डियेसी फैमिली, राइट। बनाना इज म्यूसा पैरासिटिका म्यूसेसी फैमिली। देन वी हैव ग्रेप्स वाइटस वेनिफेरा विटेसी फैमिली, और आपको याद होगा ग्रेप की स्टडी को बोलते हैं विटिकल्चर, ठीक है। तो वाइटिस जहाँ पे है दैट मीन्स ग्रेप्स, राइट। गुआवा साइडियम गुजावा मर्टेसी फैमिली। Apple is Malus domestica, Rosaceae family. Orange is Citrus sinensis, Rutaceae family. Papaya is Carica papaya, Caricaceae family. Pineapple is Ananas comosus, Bromelaceae family. Pomegranate is Punica granatum, which is Lytheriaceae family. Lychee is Lychee sinensis, which is Sapondaceae family. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स हैं जिनकी आपको साइंटिफिक नेम और फैमिलीज याद करनी है। देन कमिंग टू द फ्लावर क्रॉप्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि कभी कभी फ्लावर क्रॉप्स से भी क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक क्राइजेमेंथम से क्वेश्चन पूछा गया था एक साल, ठीक है, आपके नहीं सॉरी कार्नेशन से क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक इन 2024 में कार्नेशन का साइंटिफिक नेम पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे रोजा स्पीशीज, रोज के लिए बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट रोजा स्पीशीज एंड फैमिली भी रोजेसी है। मेरीगोल्ड के लिए इट इज टेजेटेक्स इरेक्टा विच इज एस्टरेसी फैमिली। देन जैस्मिन के लिए जैस्मिनम सैमबैक ओलेरेसी फैमिली। क्राइजेंथेमम के लिए क्राइजेंथेमम इंडिकम, ठीक है, नाम से ही है, एस्टरेसी फैमिली। ग्लैडियोलस के लिए ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरा इरिडेसी फैमिली। ट्यूबरोज के लिए है पोलियंथस ट्यूबरोज एमारिलिडेसी फैमिली। जरबेरा के लिए जरबेरा जैस्मिनोई एस्टरेसी फैमिली। एंड कार्नेशन के लिए डायंथस कैरोफिलस कायरोफिलिसी फैमिली, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप्स होंगी जो आपको याद रखनी है। सिमिलरली वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, टोमेटो के लिए सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन सोलेनेसी फैमिली। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनेसी फैमिली। ब्रिंजल सोलेनम मेलेंगोनिया दैट इज सोलेनेसी फैमिली। ओकरा इज एबल मॉस्कस एस्कुलेंटिस मालवेसी फैमिली। कैबेज इज ब्रेसिका ओलरेसी कैपिटाटा। कॉलीफ्लावर इज ब्रेसिका ओलरेसी बॉटराइटस, ठीक है, दोनों ही ब्रेसिकेसी फैमिली के हैं। कैरेट इज डाकस करेटा एपिएसी फैमिली। अनियन इज एलियम सीपा एमारिलिडेसी। स्पिनच इज स्पिनिका ओरिलेसिया एमरेंथेसी फैमिली। एंड पी के लिए पाइसम सटाइवम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पी तो आई थिंक बहुत ही कॉमन नेम है पाइसम सटाइवम, जो हमने कॉलेज में स्कूल में भी पढ़ा इनफैक्ट, राइट। तो फेवेसी फैमिली, राइट। सो ये वेजिटेबल क्रॉप्स हो गई। सिमिलरली आपके कुछ फॉरेस्ट क्रॉप्स हैं जिसके लिए टीक टेक्टोना ग्रैंडिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लेमिनेसी फैमिली। सैलिस सोरेया रोबस्टा डिप्टेरोपिएसी फैमिली। देन बैम्बूसा वल्गैरिस। यूकेलिप्टस ग्लोबुलस। सैंडलवुड सैंटलम एल्बम। डियोडार सेड्रस डियोडरा। then your neem is Azarecta indica. Rubber is Hevia brasilensis. Mahogany is Sweetenia mahogany. Arjun is Terminalia arjuna, ठीक है। तो इनके फैमिलीज भी दी है यहाँ पे। अगर आप फैमिलीज याद नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप साइंटिफिक नेम इनके याद कर लो, ठीक है। कभी कभी फॉरेस्ट्री क्रॉप के भी साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। तो ये कुछ रहे आपके इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स एंड क्रॉप्स जहाँ से आप इतना एटलीस्ट याद कर लो। इसके अलावा एडिशनली कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मोस्ट चांसेस हैं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अदरवाइज इसके अलावा कोई रहता है तो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट, क्योंकि सारे याद करना पॉसिबल नहीं है। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले, वेरी गुड, इसका आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया, दैट इज पोडियम वल्गेर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, ठीक है, 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। सो इफ यू नो द आंसर प्लीज लेट मी नो, otherwise I'll tell you few important dates that are very important for you to learn, ठीक है, and then we'll answer this question. So students, if you know the answer, good, otherwise I'll let you know what are the few important dates that you have to learn. So कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद करना है, 10th फरवरी वर्ल्ड पल्स डे, 21st मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 22nd मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22nd अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 26 अप्रैल इंटरनेशनल सीड डे, 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत कॉमन है ये, शायद सबको याद होगा, राइट। 1 जुलाई इंटरनेशनल फ्रूट डे, 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, 15 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर, राइट। 16th October World Food Day is important. Now 26th November National Milk Day is important.
3rd December is important, National Agriculture Education Day, right? 5th December is important, World Soil Day. 23rd December is important, National Farmers Day or Kisan Divas, which is basically to celebrate the birth anniversary of Mr. Chaudhary Charan Singh, and National Agriculture is to celebrate the birth anniversary of Mr. Rajendra Prasad, which is who is the first agriculture prime minister, agriculture minister of our country. ठीक है, चलो, ठीक है. I'm so sorry for this. ठीक है. So these are some important days that you have to learn, right? Now let's solve this question. So it says Agriculture Education Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of which of the following personality? Okay, so I hope it's clear now, right? Very good. It's Dr. Rajendra Prasad. Okay? So I hope now it's clear. Now students, I'll be giving you one practice question. Please do read this question carefully and then give me the answers in the comment section. Okay? I want your answer in the comment section and I'll see who have given the correct answer. Also, I'll give you the answer for this question tomorrow. Okay? So question is, which of the following accurately identifies a major cereal crop alongside its correct scientific name? Okay? So your options are barley, Avena sativa, wheat, triticum aestivum, paddy, sorghum bicolor, rice, Cirsium arietinum, oats, Penicetum purpureum. ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर देना है मुझे चैट सेक्शन में. So with this, I'll end the session. Okay. So yes, that's all. Now, if you have any doubt, you can tell me. Otherwise, I'll end the session. And before I end the session, I would like to tell you about our one-time sale that is going on, right? If you're interested in our course, so students, we are running one-time sale, and for all the regulatory body courses, you can see that. And also we have a demo course, okay, that is provided for 2 days for just 1 rupee. And if you want to see what kind of content we provide in our actual course, you can access that demo course and you can see what kind of content is provided, and accordingly you can decide if you want to purchase our main course. Otherwise, other than that, if you have any doubt, anything to ask, please let me know. ठीक है, कोई query है, कुछ आपको पूछना है, please you can ask. Again, thank you so much for joining. These classes will be regular in nature. So tomorrow also I'll cover another topic, which is agronomy and field crop. If you're interested, you can come and join the session, right? Chalo. With this, now any doubt, any query anybody have? ठीक है, I don't think there is any doubt, right? चलो, अगर कोई doubt होता है, you can ask me tomorrow as well. Yes, RJ Singh, what about NABARD descriptive? NABARD descriptive कैसे preparation करनी है? If you want to know that, so let me tell you that for descriptive answer writing, पहले आपको you will have to read the content. ठीक है, जो भी आपका syllabus है, whatever the syllabus is, there is the syllabus of ESI, there is the syllabus of ARD which is given to you, right? And descriptive answer writing आपका ESI और ARD से ही होता है, और English का एक essay वाला होता है जो आपको essay के लिए essay writing practice करनी है. तो first read all the topics that are given in the syllabus. After that, see what questions have been asked in the previous year examination with regards to descriptive answer writing. Practice all those questions, and after that, see what can be the probable question from the syllabus that you have. Try to practice those questions, right? So that's how you practice your descriptive answer writing, and use any AI tool for evaluation, because evaluation is also important. So whatever answer you are writing, draft that answer, give it to the AI, ask AI to evaluate it, and take the feedback and try to incorporate that feedback in the next question or next answer, I would say. Clear? So that's how you can improve on your descriptive answer writing, and that's how you can cover your descriptive answer writing. ठीक है. Okay, Aditya, NABARD Grade A notification. See, no fixed date right now. Till now we don't have any fixed date for that. But yes, you can expect कि September में notification आ जाएगा, and your phase 1 will be in the October, right? See, this class starts at 1:30 PM. ठीक है, तो 1:30 से 2:30 बजे की क्लास है. You can come and join. Okay. दिव्या, सी आप अगर इन क्लासेस की बात करो तो ये तो जस्ट एक नॉर्मल क्लासेस है, बट अगर आप डेमो कोर्स की बात करो, डेमो कोर्स इज बेसिकली द कोर्स वेयर यू विल गेट टू सी, वेयर यू विल गेट टू नो कि हम एक्चुअल कोर्स में क्या कंटेंट और किस तरीके से कवर कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली आप उस डेमो कोर्स को देख सकते हो, उसमें कंटेंट इज अवेलेबल एज इट इज, दैट इज प्रोवाइडेड इन द मेन कोर्स, बट यहाँ पे डाउनलोडेबल नहीं है कंटेंट.
₹1 में आप 2 दिन के लिए उसको एक्सेस कर सकते हो. यू कैन रीड थिंग, यू कैन वॉच वीडियोज, यू कैन डू एवरीथिंग. डाउनलोडेबल नहीं है, बट आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक्चुअल कोर्स लेना है या नहीं लेना. ठीक है, चलो. एनीथिंग एल्स? You're welcome, voice of Swara. You're welcome, Jacknath. Welcome, Bhik Ramesha. Okay, ठीक है. Thank you so much, everyone, for joining the session, and you're most welcome. Tomorrow also we'll do that. Okay, so do join the session tomorrow as well. So now I think I have answered all the queries. Thank you so much for joining.